जी। ओके सो वेक्टर स्पेसेस के बारे में हमने पढ़ा, बेसिस पढ़ा, डायमेंशन पढ़ा। ओके सो आज हम कुछ और टॉपिक्स हैं कि हमारे पास रो स्पेस क्या होता है, कॉलम स्पेस क्या होता है ना, और नल स्पेस क्या होता है ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके सो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दिस इज टॉपिक, यू कैन से मोर टॉपिक्स ऑन वेक्टर स्पेस, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी डिस्कशन करेंगे हम लोग। सो लेट्स बिगिन विद द रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो रो स्पेस क्या होता है? रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, तो एक मैट्रिक्स है, उसके रोज के द्वारा जो जनरेटेड स्पेस होता है उसको रो स्पेस बोलते हैं। तो यू कैन जस्ट हैव द definition दैट द स्पेस द स्पेस जनरेटेड बाय द स्पेस जनरेटेड by rows of the matrix, rows of a matrix, it's called its row space. ओके सो यू कैन क्लियर अबाउट कि अगर हम कोई रो लेते हैं तो उसमें जो टपल होंगे वो एन होंगे, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है, उतने वहां पर टपल्स होंगे। तो यू कैन जस्ट हैव, इफ यू हैव a matrix, let if a is m by n order matrix, ठीक। तो क्योंकि रो जब लेंगे तो रो के अंदर एन टपल्स होंगे, मतलब जितने कॉलम्स होंगे उतने टपल्स होंगे, इसका मतलब वो आर एन का सबसेट होगा, दैट विल बी सबसेट ऑफ आर एन, यू कैन से सब स्पेस ऑफ आर एन। सो इफ ए इज अ m by n रियल मैट्रिक्स then its row space is the subset of या subspace of Rn of Rn. Clear? So this is your row space of a matrix. So that is generated by the rows of a matrix. ओके और रोज के अंदर जो टपल्स होंगे वो उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे मैट्रिक्स के अंदर। तो वो हमारा जो सब स्पेस बनेगा दैट विल बी ऑफ द आर एन मतलब एन इन द नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके similarly we have a definition for the column space, the space which is generated by the columns of a matrix. So let's define this also, that is column space of a matrix, space of a matrix, column space of a matrix, the space generated by columns of a matrix. Okay, the space generated by column of a matrix is called, its column space. ओके तो कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, द स्पेस जनरेटेड बाय द कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स कॉल्ड इज कॉलम स्पेस। अब देन जब हम कॉलम को लेंगे तो उसमें जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने टपल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट विल बी द सब स्पेस ऑफ आर एम मतलब नंबर ऑफ रोज। ओके तो यू कैन जस्ट हैव, इफ यू आर सेइंग इफ ए इज अ m by n रियल मैट्रिक्स,
मैट्रिक्स देन its column space is column space is a subspace of Rm. Okay. So if A is a m by n real matrix, then its column space is the subspace of Rm. क्योंकि जब हम कॉलम को ले रहे होते हैं तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतना टपल बनेगा, तो दैट विल बी द ऑफ द Rm. तो इसको हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लें, जनरलाइजेशन ले लेते हैं. इफ आई एम टेकिंग if this is A is a matrix of order m by n, looks like this: A11, A12 up to A1n, and A21, A22 up to A2n, and this is of AM1 up to AM2 up to this is AMN. Then the row space of A, so this is your A11, A12 up to this is your A1n, A21, A22 up to A2n. This is AM1, AM2, AMN. तो हम एक देख रहे हैं, जब हम रो स्पेस को जनरेट कर रहे हैं बाय द रोज ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसमें कितने टपल्स आ रहे हैं? अप टू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना. जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने उसके अंदर टपल्स मिल रहे हैं. जैसे A12, A1n, है ना. तो यहाँ पर A21, A22, A2n अब तो n जा रहे हैं. तो कितने नंबर ऑफ टपल में कितने हैं? n टपल्स हैं, है ना. तो n टपल्स हैं, इट मींस दैट विल बी द subspace of a Rn. Okay, so this is the subspace of Rn. और हमने देखा था कि अगर हमें मान लो सब स्पेस आपको रो स्पेस निकालना है, उसकी बेसिस कैलकुलेट करना है, तो ये जो जनरेटिंग सेट है, ठीक है, इस जनरेटिंग सेट को हम इसको रेड्यूस करते थे लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में, और लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल जाते हैं, दैट विल फॉर्म अ बेसिस एंड दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ अ रो स्पेस. तो सिमिलरली हम अगर इसकी रैंक निकाल लेते हैं इस मैट्रिक्स से, तो उससे भी पता चल जाता है कि लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने हैं, ठीक है. और जो जितने लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं उतनी रैंक होती है, तो वही हमारे पास डायमेंशन हो जाएगी रो स्पेस की एज वेल एज कॉलम स्पेस की. ठीक है. तो नेक्स्ट अगर हम कॉलम स्पेस की बात करें, कॉलम स्पेस ऑफ ए, तो कॉलम से द्वारा जनरेटेड हो, तो कॉलम्स हमारे पास कौन है? A11, A21 एंड अप टू AM1. तो यहाँ पर कितने टपल्स आएंगे? m टपल्स आएंगे. फिर सेकेंड कॉलम A12, A22 एंड अप टू AM2, and so on. In the last column you have A1n and up to AMN. ठीक है. तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर ऑफ, यू कैन से नंबर ऑफ टपल्स हैं, यहाँ पर कितने हैं? दैट इज योर n, m टपल्स, टपल पॉइंट्स हैं. तो ये जो हमारे पास सब स्पेस बनेगा कॉलम स्पेस, दैट इज द सब स्पेस ऑफ Rm, ऑफ Rm. तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है m बाई n, ठीक है, सो जो हमारे पास रो स्पेस होता है, स्पेस ऑफ A is the subspace, is a subspace of Rn. ध्यान देना, नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना. और अगर हम कॉलम स्पेस की बात करें तो इजिली सी
कि जो कॉलम स्पेस होता है, दिस इज कॉलम स्पेस, स्पेस ऑफ ए इज अ सब स्पेस ऑफ आर एम। ओके, नंबर ऑफ रोज। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लियरली हमें जनरेटिंग सेट मिल गया, और जनरेटिंग सेट को हम रिड्यूस करते थे इन अ बेसिस टू फॉर्म द टू कैलकुलेट द एल आई वेक्टर्स, है ना। तो अगर जनरेटिंग सेट के अंदर जितने एल आई वेक्टर्स होते हैं वही मिलकर हमारे पास क्या बना देते हैं, बेसिस बना देते हैं। तो दैट विल बी द डायमेंशन। तो अगर कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, अगर हमारे पास वेक्टर्स लिखे होते थे तो उनको हम मैट्रिक्स में लिखने के बाद उनको हम एल आई वेक्टर्स में रिड्यूस करते थे। अभी क्या है कि हमारे पास मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है, तो हमें अगर रो स्पेस या कॉलम स्पेस की डायमेंशन पता करना है तो भी जस्ट सिंपली फाइंड द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। रैंक में अगर मिल जाएगी, और रैंक या रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उससे एल आई वेक्टर्स भी दिखने लगेंगे, नॉन जीरो रोज जो होंगी दैट विल बी द एल आई वेक्टर्स। ठीक है, तो वही एल आई वेक्टर्स को हम लेकर बेसिस बना देंगे, और काउंटिंग ऑफ दैट नॉन जीरो वेक्टर्स will be the rank of the matrix, and that is also the dimension for the row space as well as the column space। तो अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस, यू जस्ट फाइंड द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स, है ना। या फिर डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस, यू जस्ट फाइंड द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, बट द रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस में बी डिफरेंट। ठीक है, वो डिफरेंट हो सकते हैं, रैंक उनकी सेम रहेगी, उनकी डायमेंशन सेम रहेगी, बट दे विल बी डिफरेंट बिकॉज दे विल बी जनरेटेड बाय द डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एल आई वेक्टर्स, मे और मे नॉट। ओके, सो उनकी डायमेंशन सेम है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि बोथ विल बी द सेम वेक्टर स्पेसेस। ओके, तो लेट्स राइट दिस रिजल्ट हियर for the dimension of a row space and the column space. That the dimension of row space and of that column space of a matrix are both equal to rank of the matrix। ओके, तो both are equal to the rank of the matrix, है ना। मैट्रिक्स की जो रैंक होगी दैट विल बी the dimension of the row space and column space। Okay, next definition है that of for the null space of a matrix। so what is the null space? So null space is what? Null space of a matrix। तो इस ओके, सो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए be a matrix of order m by n, then the null space of A is defined as the null space of A। एक्चुअली हमने एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ा था। तो अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास
जो सोल्यूशन रखता है, या यू कैन से वी हैव द सोल्यूशन सेट फॉर द होमोजीनियस सिस्टम, तो उसमें जो मैट्रिक्स होते थे उस मैट्रिक्स का वो क्या कहलाता है, नल स्पेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, तो डिफाइंड एज नल स्पेस। हमने देखा था ना कि हमारे पास जो होमोजीनियस सिस्टम है उसका जो सोल्यूशन सेट है वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ना। दिस इज तो एक्स बार सच दैट ए एक्स बार इज जस्ट इक्वल टू ए बार इज द जीरो वेक्टर। तो अगर हम वो सारे एक्स का कलेक्शन जो ए में मल्टीप्लाई करके नल मैट्रिक्स दे दे रहा है, तो वो कलेक्शन हमारे पास नल स्पेस पर आता है, दैट इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस। तो वेर यू कैन हैव दिस एक्स बार इज अ n बाई वन वेक्टर। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर ऑफ ए इज m बाई n, तो n बाई वन होगा। एंड जो जीरो वेक्टर है, एंड दिस जीरो वेक्टर जीरो इज अ m बाई वन वेक्टर। ओके, तो बेसिकली दिस इज a इज ऑफ ऑर्डर m बाई n। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो सकता है दैट इज योर x बार, जिसका ऑर्डर है n बाई वन, और जब मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट अ जीरो वेक्टर एंड दैट विल बी ऑफ ऑर्डर m बाई वन। क्लियर? तो यहां पर कलेक्शन ऑफ ऑल द वेक्टर्स which multiplied with a give द जीरो वेक्टर। या यू कैन से कि ये जो होमोजीनियस सिस्टम लिखा है, इस होमोजीनियस सिस्टम का जो सोल्यूशन सेट है दैट विल बी द नल स्पेस ऑफ ए। और इसको हम कर्नल ऑफ ए भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड कर्नल ऑफ ए with the matrix for the matrix A. So this null space is also called the kernel of A. तो clearly you can see कि जो नल स्पेस है इसके अंदर जो वेक्टर्स हैं दैट इज ऑफ ऑर्डर n बाई वन, ये इस टाइप के वेक्टर्स हैं। सो क्योंकि यहाँ पर n टपल्स हैं, है ना, n टपल्स वेक्टर्स हैं, इन अ कॉलम वेक्टर्स वी हैव वन कॉलम एंड n रोज, तो कॉलम वेक्टर्स को टपल के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये दिस collection this vector will belongs to Rn। okay, so you can easily say, you can say clearly say null space of A is a subspace of Rn। ठीक, तो जो हमारे पास रो स्पेस था वो भी हमारे पास Rn का सब स्पेस था, और जो नल स्पेस होता है वो भी Rn का ही सब स्पेस होता है, बिकॉज ए मैट्रिक्स में m बाई n ऑर्डर की है, तो उसमें मल्टीप्लाई जो वेक्टर हो सकता है दैट विल बी ऑफ n बाई वन ऑर्डर। ओके, तो दिस इज द सब स्पेस ऑफ Rn। क्लियर? अब इसके ऊपर हम कुछ रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि हमने जब नल स्पेस निकालना होता है तो वी वांट डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस। तो डायमेंशन ऑफ अ नल स्पेस इज बेसिकली अगर कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का रैंक निकालें, एंड रैंक में से हम एन जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसके अंदर नंबर ऑफ उसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें देन यू विल गेट द फ्री वेरिएबल। कितने फ्री वेरिएबल्स हैं, और दो फ्री वेरिएबल्स होते हैं, वही हमारे पास क्या कहलाती है, डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस। तो बेसिकली यू कैन से डायमेंशन ऑफ अ नल स्पेस इज n माइनस आर, आर इफ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज आर। ओके, तो लेट्स राइट सम रिजल्ट्स हियर। ठीक, so number one, that if a is a m by n order, m by n matrix, then dimension of null space of a is n minus r। ठीक है, where r is the rank of the matrix।
matrix A. Clear? So if A is the m by n matrix, then dimension of the null space of A is basically n minus r, where r is the rank of the matrix A. अच्छा, रो स्पेस और कॉलम स्पेस का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? सिंपली रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स. बट जब हम नल स्पेस की डायमेंशन की बात करते हैं तो दैट विल बी एन माइनस आर, वेयर एन इज द नंबर ऑफ columns in a matrix. Clear? Second result, let's write the second result. So if two matrices are row equivalent, मतलब हम रो ऑफ एक दूसरे को हम रो ऑपरेशन अप्लाई करके हम पा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस. देन their row null spaces are same. Then their null spaces are same. Okay. However, converse is not true. It means that कि अगर हमारे पास दो नल स्पेसेस सेम है, ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों मैट्रिसेस हमारे पास रो इक्विवेलेंट है. बट अगर मैट्रिसेस रो इक्विवेलेंट हैं, देन डेफिनेटली द नल स्पेसेस फॉर द मैट्रिसेस विल बी सेम. ओके. तो अगर दो हमारे पास मैट्रिसेस के नल स्पेसेस सेम है, तो ये जरूरी नहीं कि वो मैट्रिसेस हमारी रो इक्विवेलेंट रही हों. बट अगर मैट्रिसेस रो इक्विवेलेंट है तो उनके जो नल स्पेसेस हैं दैट विल बी सेम. तो इफ द टू मैट्रिसेस आर रो इक्विवेलेंट, देन देयर नल स्पेसेस will be same. Then their null spaces are same. Then say are same. Same. Clear? However, converse is not true. Okay. So other कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि आइडेंटिकल सब स्पेसेस क्या होते हैं. मतलब वी हैव द सेम, तो यू कैन जस्ट हैव आइडेंटिकल सब स्पेसेस. दोनों को हम इक्वल सब स्पेसेस कब बोलेंगे, मतलब एक ही जैसा सब स्पेस कब बोलेंगे? So if you are saying let W1 and W2 be two subspaces of a finite dimensional we have finite dimensional vector space V, and we have this is S1 and S2 be their spanning set. Set respectively. Okay, so let W1 and W2 be two subspaces of a finite dimensional vector space V, and I'm just taking S1 and S2 with their spanning set respectively. तो S1 जो है वो W1 का spanning set है, and S2 the spanning set for W2. Okay, so then we have say this is identical. Identical means they have means they are same vector spaces, not a different one. Are identical. Yeah, you can see W1 is just equal to W2 if every vector of
vector of S1 can be expressed as linear combination of the vectors of x2 of s2. Clear? And every vector of s2 can be expressed as linear combination of vectors of s1. Okay, so then W1 and W2 are identical, and W1 is just equal to W2 if every vector of S1 can be expressed as the linear combination of vectors of S2, and every vector of S2 can be expressed as linear combination of vectors of S1. तो जो जनरेटिंग सेट्स हैं S1 S2 उनमें यू कैन से कि हमारे पास W1 W2 विल बी द सेम वेक्टर स्पेसेस. सो इफ एक सेट के वेक्टर किसी दूसरे सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं, या अनदर सेट के जो हमारे पास वेक्टर्स हैं वो पहले वाले के लीनियर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं, देन वी कैन से कि W1 इज जस्ट इक्वल टू 2. तो वही लिखा ना, इफ एवरी वेक्टर ऑफ S1 कैन बी एक्सप्रेस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S2 एंड एवरी वेक्टर ऑफ S2 कैन बी एक्सप्रेस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S1, देन वी से कि बोथ द वेक्टर सब स्पेसेस आर आइडेंटिकल सब स्पेसेस. ओके, तो आइए कुछ और रिजल्ट्स पढ़ते हैं. लेट्स राइट सम रिजल्ट्स हियर. तो पहला है, वी हैव जस्ट वन थिंग हियर, that is suppose we have two matrices, suppose uh, A and B, suppose A and B, we are two matrices, such that AB is defined. मतलब उनका प्रोडक्ट डिफाइंड है, ए बी इज डिफाइंड. तो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी इन सच अ वे दैट प्रोडक्ट इज डिफाइंड. ओके, देन द row space of AB is contained in the row space of B. The space of B. It means you can say it can be written as the linear combination of, okay, the rows of B, है ना. तो the row space of AB is contained in the row space of B, and the column space of AB is contained in the column space of A, space of E. क्लियर? तो अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, सो दैट प्रोडक्ट इज पॉसिबल, देन रो स्पेस ऑफ ए बी इज कंटेन इन द रो स्पेस ऑफ बी, एंड कॉलम स्पेस ऑफ ए बी इज कंटेन इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए. ओके, नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं. That suppose A and B are two vectors, matrices A and B are row reduced echelon form,
रो reduced echelon form matrices, then this is A and B have same row space, if and only if they have the same non-zero rows. ओके, तो डबल आरईएफ इट मींस रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर ए और बी हमारे पास सेम रो स्पेस को तभी बनाएंगे जब दे हैव द सेम नॉन जीरो रोज। ध्यान देना, यहाँ पर सेम रैंक की बात नहीं करी है, सेम नॉन जीरो रोज। इसका मतलब जो हम रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में बनाए जिसमें हमारे पास डायगोनल पे आइडेंटिटी एलिमेंट रखना होता है, तो उस केस में हमारे पास दोनों के दोनों जो नॉन जीरो रोज दोनों के दोनों डबल आरईएफ में मिले वो दोनों सेम हो, देन वी कैन से कि जो रो स्पेस है ए और बी का दैट इज सेम, दैट इज आइडेंटिकल। नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं, वी हैव टाइम। ओके, थर्ड नंबर दैट इज द रो the row space of a matrix A is same as the column space of its transpose। तो दिस इज फाइन बिकॉज जब हम रोज ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज अब कॉलम्स में आ गई तो वहां से हमारे पास जो मिलेगा, तो दिस इज in a similar way that row space of two matrices of same size are same if and only if they are row equivalent। दे आर रो इक्विवेलेंट। तो अगर वो रो इक्विवेलेंट है मतलब एक को किसी दूसरे मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के हम पा सकते हैं, तो ऐसी मैट्रिसेस के जो रो स्पेसेस होंगे दैट विल बी सेम इफ एंड ओनली इफ। अगर रो स्पेसेस सेम है तो वो रो इक्विवेलेंट होंगी मैट्रिसेस। एंड देन नेक्स्ट टू मैट्रिसेस आर रो इक्विवेलेंट then their कॉलम स्पेसेस नीड नॉट टू बी सेम। रो इक्विवेलेंट है तो उनके रो स्पेसेस सेम होंगे बट कॉलम स्पेसेस इज नॉट नेसेसरी सेम। कॉलम स्पेसेस नीड नॉट बी सेम। ओके, नेक्स्ट वन, सिक्स्थ रिजल्ट, that the system of linear equation, the homogeneous equation, non-homogeneous, the system, this ax is equals to b is consistent। consistent मतलब इनका solution है, is consistent if and only if b is belongs to the column space of a। ठीक है, तो बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। अगर बी ए के कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है देन दिस सिस्टम हैज द सॉल्यूशन, दिस इज कंसिस्टेंट। ओके, तो दिस इज योर ऑल अबाउट योर
रो स्पेस, कॉलम स्पेस एंड नल स्पेस। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज व्हाट, n माइनस आर, बट डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस एंड रो स्पेस विल बी द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर? So agar two matrices are row equivalent, then their row space will be same, but column space need not to be same, है ना? और row space of a matrix is same as the column space of its transpose। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। जो ये लास्ट रिजल्ट है 6, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि द सिस्टम ऑफ x इक्वल्स टू बी इज कंसिस्टेंट if and only b belongs to the column space of A। It means b is a linear combination of the columns of A, है ना? That will be say that is belongs to the column space of A। Clear? So this is all about your row space, column space and null space। तो इसके ऊपर प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो अभी हम लिख दे रहे हैं आपको कौन सी प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो I'm writing the question here, let's write a question here। तो we have the so that the subspace spanned by the vectors v1, that is what, this is your 1 comma 2 comma 1, v2 that is equals to 1 comma 2 comma 3, and the subspace spanned by this is w1, that is your 0 0 1, and that is w2 that is equals to 1 comma 2 comma 5 are identical। सो इसमें इन्होंने बोला है कि सो दैट द सब स्पेस स्पैन्ड बाय द वेक्टर्स this and a subspace spanned by these vector w1 and w2 are identical। Identical means it means the this v1 v2 is can be written as the linear combination of w1 and w2, and w1 and w2 can be written as the linear combination of v1 and v2। so this is your then we can say this these subspaces is are identical। Okay, so let's meet in the next session। So thank you so much, and we will meet in the next session। तो नेक्स्ट लिंक से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए मीटिंग को।